अगर आप एक ऐसे एमबीए एस्पिरेंट या स्टूडेंट हैं जो कि फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, काफी श्योर हैं या फिर श्योर नहीं भी हैं, इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तक की जर्नी बताऊंगा कि कैसे आप फाइनेंस में अपने स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन गेट अ गुड जॉब इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च एनालिस्ट, प्राइवेट इक्विटी, वीसी, whichever you want. This is going to be the only video you need to watch on finance skills needed for MBA. Genuinely, this is the only roadmap you need to watch for yourself. And the reason why I said that you can get off-campus jobs is because one, you could be at a B school wherein quality finance job roles do not come, and hence this video will even help you that okay, beyond off-campus, beyond the limitations of your own B school, how can you get the best jobs, and also on-campus jobs निकालना तो आसान है ही, इस वीडियो में रियल एफर्ट है अगर मैं आपको ऑफ कैंपस तक के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं. वेल, बिकॉज इस वीडियो में मैं हर स्टेज पे आपको क्या करना है वो एक्सप्लेन करूंगा. वेदर यू आर एन MBA aspirant who's about to write CAT, or whether you are an MBA aspirant who is now about to enter your B school, or you're already in your B school in the first year or in the second year, this video is for everyone. This is going to be a clear roadmap, stage by stage, piecemeal approach. That's that. I am Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट करी थी, skills required for MBA, the MBA skills, and that video got a lot of views, lot of appreciation. So after you watch this video, you should go back and watch that, because in that video I had shared what are the basic hygiene skills which every MBA student needs to have across finance, marketing, consulting, whichever field. But now I am creating specialized videos for each specialization कि भाई finance skills क्या चाहिए for MBA, marketing skills क्या चाहिए for MBA, and उसमें सबसे पहली वीडियो यही है कि finance, because I know a lot of students go into their MBA program with this feeling that we'll do finance, but the biggest problem is the two problems which happen, which is why I had to make this, and you need to understand and watch this completely. You need to hear me out कि दो problems क्या हैं जो इस वीडियो में solve होंगी. There is already a lot of content around that, you know, what are the finance skills required for MBA, what are the certifications in finance which I should do, बहुत videos हैं, but उसमें problem number one ये है that they give you कि certifications ये चाहिए, courses ये होंगे, but they don't tell you that when do you have to do them, because if you start to do some big certifications from right now when you're just an aspirant, and जब आपको शायद clear भी नहीं है कि finance आप करना चाहते हैं या फिर finance आपके लिए है या नहीं है, तब obviously as you'll start that you'll not complete it, and then instead of you liking finance you'll start to feel very scared of it कि यार finance का वो certification तो मुझसे हुआ नहीं, तो बहुत कुछ syllabus है, ये कैसे होगा, finance अच्छा नहीं है, नहीं करते. Those videos are actually damaging you because only of one reason, that while they're saying the right things that yes you should do financial statement analysis, you should do financial modeling and all of those things, they're not giving you a roadmap. उनका शायद intention भी नहीं है, because their intention is top 5 skills for finance, 4 more finance skills of finance, 6 more finance skills finance. That is one problem. The second problem is, again, every 4 weeks, 5 weeks they're creating a new video that, you know, 5 more courses which you can do on finance, 4 more courses which you can do on finance. The problem is जब भी उनको कोई नया कोर्स सामने आता है, they make a video on it, because obviously more videos on the same topic means more views. That is why a roadmap, that exactly what will help you at each stage, is important. What I'll share now is that if suppose you are an MBA aspirant and you have not yet appeared for CAT, अब आप CAT लिखेंगे उस समय में आप फाइनेंस के लिए कर क्या सकते हैं, एंड whichever stage you are in, आप इनमें से जिस भी स्टेज पे हैं ये वीडियो आपके लिए है. So watch this, but watch it from the starting, because you need to know कि उसके पहले के steps क्या थे which you might have to do. Now, if you're an MBA aspirant till CAT, here is what you have to do. I have specified 30 days here because whatever I am about to say will require only maximum 3 weeks, 4 weeks at max. तो अभी अगर 6 months भी हैं to write your CAT, you still need to spend only 3 to 4 weeks on this. Now, what exactly is this? At this stage, when you're an aspirant, you're appearing for CAT, your focus needs to be only one thing, which is this. You just need to get क्लैरिटी ऑन द जॉब रोल्स आफ्टर MBA, कि भाई फाइनेंस में MBA के बाद जॉब रोल्स क्या होते हैं, बस मुझे पता होना चाहिए. अब इसमें मैं 3 चीजें, मैं हर चीजों में आपको आई विल गिव यू 3 थिंग्स, व्हाई, व्हाट एंड हाउ, कि ये क्यों, व्हाई शुड दिस बी योर फोकस इन दिस फेज, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू दैट. नाउ फर्स्ट थिंग, सी व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एनीथिंग इन लाइफ यू हैव टू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ कि अच्छा मुझे फाइनेंस, ओके फाइनेंस इज अ ब्रॉड फील्ड कि फाइनेंस में जाना है, भाई फाइनेंस में क्या करना है, दैट इज द काइंड ऑफ एजुकेशन
and foundation I want you to start with, because only then you will have a goal for yourself. This is what I tell to every student who's there in my Telegram group as well, that भाई पहली चीज है बिल्कुल क्लैरिटी हो जाइए कि आपकी जॉब रोल क्या चाहिए. Secondly, you need to know that okay, what exactly do MBAs do in finance. जिस भी जॉब रोल में आप जाना चाह रहे हैं उसमें एक MBA स्टूडेंट का डेली काम क्या है, बिकॉज देखो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या हो जाती है, वी गेट फैसिनेटेड बाय द जॉब रोल्स, कंसल्टिंग, finance, investment banking, private equity, VC, but we don't even know what their schedule is, what are the things which they are supposed to do, what they do. Then only we get to know whether this is for us or not, whether this much stress we can endure or not, all of these things. That is why after 1 year of getting into that job, somebody would say that this was not for me, तो बहुत stressful है, and then things happen like suicides. That is what it is. So be careful at this stage when you're an aspirant and आपने CAT लिखा भी नहीं है अभी, अगर आप देख रहे हैं, focus only on what are the job roles and what do they do, and I've explained this already. Now what exactly you have to study about? See, there are broadly these 5 job roles about which you need to study. Finance में जो quality job roles हैं MBAs के लिए, the finance jobs for MBAs, the jobs in finance after MBA, वो ये 5 ही हैं, and I've almost ranked them. The topmost is obviously investment banking, then उसके इर्द गिर्द आ जाता है risk management, private equity, venture capital. Then the lower 2, which is commercial banking and financial and equity analyst, these 2 are the job roles which come in most of the B schools. तो जो टॉप के 3 है रोल वो आते हैं बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में, आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, SPGN, यहाँ वहां पे. Whereas जो आखिरी के जो 2 हैं वो आते हैं आपके सेकंड एंड थर्ड जनरेशन IIMs में. थर्ड जनरेशन में शायद नहीं भी आते, बट सेकंड में तो फॉर श्योर है. Therefore you need to study about each of them कि हर में क्या होता है. This knowledge will take you much far because this will help you appreciate that, it will make you feel more about it, and your goal is going to be set. Goal setting is important. You need to be able to visualize yourself in that field. मैंने ये मिस्टेक करी हुई है. जब मैं IIM उदयपुर में एंटर करा था मुझे ये इंप्रेशन था that you know what, I want to do finance because I was just fascinated. मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो था that was entirely in marketing and product management, but because it was fashionable to say finance, when I entered IIM Udaipur I was all about finance. I was even considering to take CFA, to do CFA, and then I took some online programs on Udemy and this and that, and halfway through it Bini, बहुत early I was like I'm scared of this because ये करना क्यों है, ये सब क्या करना होता है, इसका यूज क्या है, I don't know, because my goal was not set. I didn't know about the job roles. That is why, my dear friends, learn from the mistakes which I committed and learn from the achievements of my students and my friends. This is the way to go. Now how do you do it? I'll tell you the classical way. इसमें मेहनत है but करना होगा. Please do not be lazy कि sir please give us some मतलब like link to this and that. No, you have to do the hard work because this is the research phase. What you have to do? 2 things you have to do. First thing is YouTube पे जाओ and enter the role. For example, if you want to search about investment banking, then search investment banking after MBA, risk management after MBA, commercial banking after MBA, private equity after MBA. Search these एक एक करके. I have not come across a single channel जिसमें ये सब roles अच्छे से explain करे हुए हैं. ऐसा कोई channel नहीं है. तो even if you find one, which are the ones which even I have seen in my research, but they are not adequate for that. However, I am trying to create that place that wherein I can give you in-depth info about all of them. So therefore, I would actually advise you to go ahead and subscribe to the channel because I'm going to bring you more such roadmaps, specific roadmaps to specific job roles after MBA, be it in finance, marketing, operations, whichever field. That is the first thing. However, if you want to make it simpler for yourself, what I have started to do for you is that I have created a course for you called How to Be School. In this course, what you will see is that I have compiled an entire library of all the things you need to know about each of the top B schools. So all you have to do is just find this link in the description, come on this page. My objective behind this course is one simple thing, which is also my objective of this YouTube channel, this video, that how can you maximize your MBA without feeling scared or without feeling lost. That is what this course is. When you will scroll down here, go to this place called curriculum, and on this you will find the link to this sheet. As you will come to this sheet, what you will see is that I have a course for you called the MBA Specialization Selector. In this course, you will read up about all of these important job roles after MBA, which is investment banking, finance, and others also. I'll keep on updating this. This is important because this is that one place wherein I have compiled all the things which you need to do, all the things which you need to know about finance. तो अगर आपको जानना है कि ये job roles क्या होते हैं, what are the finance
finance job roles, what are the skills required for finance for college students, this is the place which can actually help you a lot. Moving on from there, this was, my dear friends, the step number 1 which you need to take for yourself. This was the phase that when you are a CAT aspirant, when you have not even appeared for CAT, your focus only has to be on getting clarity for the job roles. इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ये मैक्सिमम है. Moving on from there, now suppose you have appeared for CAT हो गया आपका, अब आपके MBA इंटरव्यूज आएंगे. अब इसमें अगर आप फाइनेंस एंथुसियास्ट है तो what sort of things you have to do? Now again, you will realize the beauty of this video because now at each step you will realize that जो भी I would be advising you will actually help you achieve something important for that step. For example, now in the second step, the next thing which you have to face is the MBA admission interviews, which means what? That you have to be prepared enough for your MBA admission interviews so that there, once you go and say that sir, why do I have to do MBA? Because I am enthusiastic about finance and this and that. तो जब आप ये बोलेंगे that I want to do finance after MBA, you should not look like a clown who does not know anything about finance and is only saying that sir, I am doing some courses on Coursera about finance, therefore I know a few things about finance. No, you've got to be prepared. That is how I prepare my students inside the Creatum Club, on my groups and everywhere. So here is the thing that what you need to do for finance at this stage. Again, now your focus only has to be to prepare for the basics of finance for the interview. That is it. कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं. अभी सर्टिफिकेशंस पे दिमाग मत लगाओ. अभी से CFA करना मत शुरू कर दीजिए कि you know what, अभी मैं MBA एस्पिरेंट हूँ, अभी से अगर मैंने CFA स्टार्ट कर दिया तो मैं समर प्लेसमेंट्स तक तो शायद मैं CFA L1 हो जाऊंगा. भाई नहीं चाहिए. तुम्हें समर प्लेसमेंट्स में भी CFA L1 नहीं चाहिए. मैं बता रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी कि तुम्हें चाहिए क्या. हेलो, पॉइंट नंबर 4, MBA फर्स्ट टर्म से लेके समर प्लेसमेंट्स तक क्या करना है तुम्हें. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. नाउ इधर आ जाओ कि क्या करना है तुम्हें. व्हाई इज इट दैट यू हैव टू फोकस ऑन फाइनेंस बेसिक्स ओनली फॉर द MBA इंटरव्यूज एंड देन व्हाट एंड व्हाई. देखो, 3 चीजें, सिंपल चीज. जो व्हाई MBA का सवाल होता है ना, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर MBA एडमिशन इंटरव्यूज, you know for a fact that the biggest question you have to prepare for yourself is why MBA. My dear friends, this why MBA answer is incomplete without goal clarity. अगर तुम्हें गोल की क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हें MBA के बाद करना क्या है, what are the jobs you want to do after MBA, if it is finance, if it is MBA in finance, then what are the finance jobs you want to take up after MBA. If you don't have that clarity, your why MBA will never be concrete. Therefore, that is that. Secondly, obviously, once you know that finance, or now that, because from this step number 1, you know which job role within finance you need to do, you need to also know certain domain basics of that. कि अगर आप जाके इतनी हिम्मत से कह पा रहे हैं that you know what, I am thinking about getting into research analyst or financial research analyst after MBA. आप अगर इतना specifically कुछ कह रहे हैं, you have to back this up with certain basics. First of all, your MBA interviewers will actually appreciate that you've done your research here in point 1, कि आपको goal clarity है, and that आपको ये भी है awareness कि जिस B school के इंटरव्यू के लिए आप आ रहे हैं वहां पे ये जॉब रोल आते हैं. दैट इज वन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग. बट नॉट ओनली दैट, यू हैव बेसिक्स ऑल्सो. प्लीज एक भ्रम हटा दीजिए माइंड से कि आपको MBA इंटरव्यूज, MBA एडमिशन इंटरव्यूज के लिए यू नीड टू लोड अप योर CV. नहीं, MBA एडमिशन इंटरव्यूज में शायद आपकी CV भी कोई देखेगा नहीं. जब आप जाते हैं, जिस दिन व्हेन यू हैव योर MBA एडमिशन इंटरव्यूज, दे आस्क यू टू फिल अप अ फॉर्म. वो फॉर्म ही बस इंटरव्यूज के सामने आता है. उस फॉर्म में बेसिक्स होते हैं अबाउट यू कि कहां से आपने क्या करा है, कहां से इंजीनियरिंग करी, कहां से आपने DU में गए हैं या फिर नहीं, जो भी सब है वो सिर्फ एक फॉर्म होता है. तो डू नॉट थिंक दैट ओके फॉर माय MBA एडमिशन इंटरव्यूज आई वांट CV pointers. नो, CV pointers you require for summer placement interviews, for which you need to stick around in this video because 4th point में वो है MBA इंटरव्यूज के लिए भैया आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए जो कि आप बोल सके, एक्सप्रेस कर सके कि हाँ, अगर ये कह रहा है या कह रही है फाइनेंस में जाना है, इसको पता है क्या. अब भाई करना क्या है आपको, सीधी सी चीज है. फॉर योर MBA एडमिशन इंटरव्यूज, इफ यू आर वॉचिंग इट एट दैट स्टेज or not, I don't know when, you need to prepare these 3 things. One is financial accounting basics. Basics of financial accounting. This is the same financial accounting which our friends from commerce would have already studied in class 11. उतना ही. I am not even saying class 12th. Class 11th में जो commerce वाले friends ने आपके करा होगा financial accounting में, उसके basics जानने होते हैं. That what is a P&L statement, how do you prepare a balance sheet, ये सब चीजें, income statements, all of the basics of that. Second चीज, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स
आने चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली, दैट इज दैट. ऑल ऑफ द थिंग्स विच यू नो, विच इज द रेपो रेट, द रिवर्स रेपो रेट, द CRR, द SLR, all of these things are a part of macro economics. तो ये जरूरी है. And also some latest news on economy. Also किन दो ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर एंड एक्विजिशन M&A हुआ है हाल फिलहाल में, लास्ट एक साल में, कोई ऐसी खास न्यूज है क्या? और किन ऑर्गेनाइजेशंस का IPO हुआ है एंड व्हाट इज देयर अप्रोक्सीमेट शेयर वैल्यू ऑन दैट डे. बेसिक चीजें. These are the three things, the only three things, basics of these three things which you need to ready yourself for your MBA admission interviews. Do not think about certifications and all. How do you learn this? अब आपका सवाल होगा कि वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा, बट अब इसको सीखेंगे कहां से? भाई सीखेंगे आप यहां से. I am sharing with you 5 places where you can do this. First thing is, genuinely I am saying this to you. Go and take up NCERT की क्लास 11th की बुक. अगर आपके फ्रेंड की पढ़ी होगी उसकी उठा लेना. फ्रेश खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन एज वेल. आपको पूरी किताब NCERT के साइट पे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप. रीड दैट. ऑल्सो से सपोज इफ यू आर समबडी हु इज नॉट इंटरेस्टेड टू रीड अ चैप्टर दिस एंड दैट, NCERT बुक्स की समरीज बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी क्रिएटेड है फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स. कुछ नहीं करना है, उन चैप्टर्स पे जाओ, 1 आवर के वहां पे वो दिए हुए होते हैं, वेयर दे हैव मेड द समरी फॉर ईच ऑफ द चैप्टर. इन 3-4 आवर्स यू कैन कंप्लीट द बुक बाय वॉचिंग दोज वीडियोस एंड आपको अच्छे से समझ भी आएंगी. अगेन फॉर द इकोनॉमिक न्यूज, द फाइनेंशियल न्यूज, इन शॉर्ट्स ऐप, वेरी गुड. Livement, Money Control, these are websites which are crucial, which are extremely important. Further, again I like to say that because I sense that there is a problem, एक consolidated place पे ये नहीं है, therefore I created the course How to Be School. Again, if you go to the outline of that, you will see something even more interesting in that, which is this. Because if you now go on this outline, there is a course inside this which is called the MBA Concept Crashers. In this, I will be covering the concepts of accounting, of finance, of statistics, of eco, so that you get absolute clarity about what all is there. So you could consider going for How to Be School, because this is that program which is actually made by an MBA to help you maximize your MBA and prepare you to get the off-campus offers you should get from your MBA program. That is that. Moving on from there, what you now need to know is that ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया. अब आते हैं at that stage that your MBA interviews are completed and your first day of MBA is about to come. This is important because now you need to prepare for your MBA. If you are very sure, अभी तक तो आप बिल्कुल श्योर हैं that finance करना है, because अगर आपने इतनी मेहनत करी है about finance, this is important. Now for the next 100 odd days which you have in front of you, first day तक, जब आपके वेट लिस्ट आ रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा where will I go, या फिर हो सकता है आपके फाइनल एडमिशन ऑफर्स आ चुके हों, whatever case you are in, do that, because अगर eventually फाइनेंस में जाना है जरूरी है. इस स्टेज में आपका फोकस क्या होना चाहिए my dear friends? अब बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज की. शॉर्ट टर्म कोर्सेज मींस एनी कोर्स which you can complete in 4 to 8 to maximum 12 weeks. Not CFA, not FRM. मैं अभी भी नहीं कहूंगा आपको कि प्लीज CFA, FRM कर लीजिए. Mark my words, for your summer internship, for even the best of the finance companies of summer internship, you do not need to be a CFA, but you need to know these things which I'm sharing with you, because this is important. Again, I'm saying this to you, no other video is sharing this as a schedule. The reason why I had to make this video was because there is nobody who's sharing with you कि किस समय पे क्या करना है, ताकि हर स्टेज पे आपको उसका फायदा मिल सके. If you appreciate it, then do not forget to comment on this video with your thoughts. Also like the video, subscribe to the channel, and also share it with another finance enthusiast who's about to go for his MBA, so that they can make the most out of this. Now let's understand कि ठीक है, short term courses क्यों करने हैं, कौन से करने हैं और कैसे करने हैं. देखो भाई, सीधी सी चीज है, because now in your placement interviews, जो एक वो है ना वर्ड CV pointers in finance, की जी CV pointers चाहिए so that we can get the finance job after MBA, because now we have to build the skills in finance for MBAs. That is that. Now is the time when you need to get CV pointers. अभी तक हमने इसलिए start नहीं करा था because अभी तक we were at that stage where we had to get sure. That's that. Now also second point, you need to show some serious intent. Now you're in front of a company who is ready to pay you in lakhs for that job. You need to show your serious intent. That is why you have to do certain courses
courses, which shows that you have committed to it. But do not commit to bigger certifications, yes, because the problem is that, see, again, a certification like CFA or FRM is such a big commitment that until and unless आपने short term courses से थोड़ा सा स्वाद नहीं लिया है अगर, तो जब वो इतना बड़ा पहाड़ आपके सामने आएगा ना CFA का, you will feel scared. You will start to hate finance. I'm telling you, this happens every year. People start to do their CA, their CFA, but they are not sure about it. They are not very this thing about it, and then they don't do it. They leave it. Why do you want to do wasteful effort? हो सकता है instead of finance you might want to do marketing or something else. That is why short term courses ही करने हैं. अब भाई कौन से courses करने हैं? Sorry, क्या क्या चीजें सीखनी है अभी आपको? अब ये है important कि इस फेज में, क्या फेज है ये? MBA इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं एंड फर्स्ट डे ऑफ MBA आना है. अभी आपका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये तीन चीजें एटलीस्ट सीखनी शुरू कर देनी है. क्या क्या चीजें? कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग. मैं आपको स्टेप नंबर 4 में समझाऊंगा कि ये मैं अभी करने को क्यों कह रहा हूं, आपको जरूरी है, एंड यू विल अप्रिशिएट दैट एंड देन योर माइंड इज गोना गेट ब्लोन अवे कि वाओ दिस मेक्स सेंस. नाउ हियर इज व्हाट इट इज. हाउ विल यू डू दिस? हाउ विल यू स्टार्ट टू नाउ डिग डीपर इनटू द फील्ड ऑफ फाइनेंस? 3 थिंग्स नाउ. फर्स्ट थिंग इज लर्न MS Excel, द बेसिक. आप फाइनेंस करें ना करें, मार्केटिंग करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, ऑपरेशंस में जाएं, HR करें, जो करना है करें, कुछ ना भी करें, आप MBA प्रोग्राम में जा रहे हैं, एक्सेल तो सीखना है. आप खत्म बात है, सीधी सी बात है. देयर आर मोर देन इनफ यूट्यूब चैनल्स व्हिच विल टीच यू एक्सेल फॉर फ्री. देयर आर आल्सो पेड प्रोग्राम्स फॉर दैट. पिक व्हिचएवर, एवरीवन इज गुड. इसमें मैं ये भी यू नो व्हाट, इसमें तो आई कैन नॉट इवन से दैट नहीं यार एक्सेल ना उसका अच्छा नहीं सिखा रहा. अच्छा भाई एक्सेल तो एक्सेल है यार, सॉफ्टवेयर चलाना ही है, सब सही सिखा रहे हैं, सबके पास से सीख सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है. टेक अ 1 hour or a 2 hour crasher on that and you will know it. That's that. Now second thing is where it gets interesting. What you have to do is, my dear friends, there are certifications which you would have known. NCFM, NSE certification in financial markets. NSE, National Stock Exchange के courses और certifications हैं ये. It stands for NSE certification in financial markets. Here is what you can see. You need to focus on exactly these 4 certifications. In fact, even if you don't want to do all 4, ये मैंने एक sequence में ही arrange करे हैं. So all of this is in a sequence. Start with the financial markets beginners module. It will give you a basic idea of financial world कि markets क्या होती हैं, primary, secondary, whatever, that is that. Then come to investment analysis and portfolio management, because now this will take you right up there to give you the knowledge about investment banking roles after MBA, private equity, venture capital roles after MBA. उसका ज्ञान ज्ञात आपको यहाँ से होगा. Then wealth management and macroeconomics. Again, these 4 things are crucial. NCFM certifications are good certifications because इसमें बहुत हद तक आपका corporate finance बहुत अच्छे से cover हो जाता है, and these certifications signal to your recruiters that you're serious about it. They cost somewhere from 2,000 to 4,000 rupees, not much. Therefore, I'll just quickly show you where it is so that you can go there and you can start this off. Now, if you can see this, I am here on the NSE website, and if you go to this page, you can see this link. यहाँ पे आपके सारे certifications यहाँ पे. अब अगर मैं foundation में जाऊँ तो जो मैंने first वाला कहा था आपको, which was financial markets beginners, वो यहाँ पे है. Go ahead and read about it, read the entire course outline about it. Then from there, when you go on to the intermediate ones, then all of the remaining जो थे 3 वो यहाँ पे दिए हुए हैं. For example, if you see investment analysis का मैंने आपको दिया था, वो यहाँ पे है. You can see macroeconomics यहाँ पे है, and wealth management भी यहीं पे कहीं मिल जाएगा आपको. There it is. So my dear friends, this is what you need to do. This is what you need to think about. अगर आपको कोई certifications करने भी हैं, this is what you have to do. अगर आपको कोई certifications करने भी हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि Udemy और Coursera से ज्यादा अच्छा ये रहेगा अगर आप डायरेक्टली इसमें आए. ये शॉर्ट टर्म ही है. That's that. Similar to this, there is one more thing, NISM. This is by SEBI. That's that. And इनका भी आप जाके you can see some of the courses and the certifications. However, I would advise you to start off with this, and इसी में आपका काफी समय spend हो जाएगा. So while in this phase, I am saying to you that it is from MBA interviews till the first day of MBA. हो सकता है ये थोड़ा towards inside MBA भी थोड़ा crossover हो जाए, which is okay. You should be able to complete it within the first few weeks of your first term of MBA. That is the objective. Now let me go on and share with you the last 2 stages of this. That अब आप MBA के first term में हैं, जो first 1-2 हफ्ते का जो crazy environment होता है वो हो चुका है, सब हो चुका है, and now आप अपने first term के week number 3, 4, 5 में हैं, and now you have much more समय for you to think and do all of these things. What is it that you have to do now? Here is what it is. My dear friends, again, now your focus needs to be कि जो भी अभी तक आपने सीखा है, basics आपने सीखे थे यहाँ पे, थोड़े बहुत short term आपने side में किए हैं, अभी भी शायद
हो सकता है कि ये कोर्सेज जो मैंने किए थे एडवाइस ये खत्म ना हुए हों, विच इज ओके. डू नॉट बी अंडर दिस हरी दैट ये मुझे फर्स्ट टर्म स्टार्ट होने से पहले ही आई हैव टू डू. नो, दिस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट यू कैन डू साइड बाय साइड. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, which is what I want to share with you. Now first thing is again why do you have to do all of these things? Again, interview readiness सिर्फ concepts के बारे में नहीं है, because अभी MBA admission के interviews नहीं है. Now this is much more. Now this is, my dear friends, placement interviews. They want somebody who has practical knowledge of this. That's important. Obviously this improves your learning, because when you apply the things you've learned, सिर्फ आपने देखो क्या होता है ना, at times when we watch a course and when we see that progress bar, you know, on that course, that अच्छा your course has been completed 30 हो गया, मतलब 50 हो गया, मतलब 75 हो गया, we get a false sense of that okay we are learning. ये मेरे साथ हो चुका है. I was learning analytics from an online course when I was an MBA student, and all I used to do is laptop खोल के उसके सामने every day watch. Practice कुछ नहीं करा. जब वो course खत्म हो गया, then I was like अच्छा अब मेरे को R आ गया है. Then when I started to code, I could not write the first line. That is when I realized that the last 2 weeks which I spent on learning this course was useless, because मैंने उसके साथ parallelly projects नहीं करे. Therefore, do not worry if you've not completed the above certifications. Now is it that you also have to parallelly do it with some real world projects so that you can apply that ज्ञान. And obviously CV points तो है. If you're somebody whose CV is blank, your resume is blank, here is what you have to do. Now, what is it that you have to do? 3 things in this, 3 very important things. Firstly, now is the time, start searching and scouting for internship or live projects, but please only quality ones. Finance के नाम पे financial sales मत कर लेना. फाइनेंस के नाम पे किसी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का सोशल मीडिया हैंडल मत करना. आपका कोई फायदा नहीं होगा. यू विल ओनली वेस्ट योर टाइम, बिकॉज दे विल बी एक्सपेक्टिंग गुड नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम यू, गुड नंबर ऑफ आउटपुट, बट आपका फाइनेंशियल नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा. अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस, IB और रिसर्च एनालिस्ट, अगर इन 3 में इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज डू नॉट गो फॉर इट. इंस्टेड आई हैव सम सीक्रेट्स ऑफ व्हाट यू कैन डू, एंड नाउ वी आर in my area of forte, because I help students with what? I help students create the best career outcomes without depending on placements. How do I do that? Now here is what you have to do. Do this. Level 1 for you is that कोई भी 2 favorite organizations उठा लो of your favorite industry, कोई भी industry, and उसका financial statement analysis कर डालो. सीख के YouTube से जा के you can see, watch it. I am not saying that you will be perfect, that एक shot में कर दोगे, नहीं. You will get stuck at multiple stages, but you have to complete it over the next 2 weeks. Do that. कोई भी 2 organizations का ले लो, because I'll tell you why. The moment you will write this in your CV, or forget even in your CV, the moment you will go and say that sir I have done the full financial statement analysis of the last results of this organization, your interview conversation will be on that. And because आपने वाकई उसमें काम करे, 3-4 हफ्ते आपने स्पेंड करे हैं 2 organizations का proper financial statement analysis करा है, you will be able to speak so much more. आपके summer internship interview की conversation quality ही अलग होगी as compared to some student who will come to say, sir I have done a course on financial statement analysis, sir I have done a Udemy course on this thing, so you can ask me questions, I'll let you. No way, come on, you've done some financial statement analysis, you will be talking things like real thing. That's the first thing. Second level, अगर कर सको तो again stress मत लेना, अगर यही कर जाओगे first level भी बहुत बड़ी बात है. Second level है, कर गए, कोई startup ले लो, company ले लो जिसका at least some data, sales data, all of these things you can find from somewhere, and value that. Do a valuation exercise. This is for those people जो कि ये first stage, second stage सही समय पे अगर वो खत्म करते गए तो वो इस लेवल तक आते इस स्टेज पे जरूर होंगे कि वो ये कर पाएंगे. तो मैंने आपको क्या किया शेयर, आपको मैंने ये एक्सप्लेन करा कि भाई अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, even if you're not finding an internship, my dear friends, I've given you a strategy that you can create your own project, you can create your own live internship. So my dear friends, please do not fall for this internships, 30,000 per month internships with government. आपको शायद जरूरत भी नहीं है. You are going in for a mad rush जहाँ पे ऑलरेडी अब हजारों लोग बैठ चुके हैं. वहाँ पे लोग मतलब they are going crazy after that. Government internship, फलाना ढिमकाना. अरे भाई तुम्हें अपने फील्ड में रहो ना यार. तुम्हें अगर अपनी फील्ड की क्लैरिटी है, तुम्हें कोई गवर्नमेंट इंटर्नशिप, रैंडम इंटर्नशिप नहीं चाहिए. वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स का एक प्लॉय है, बिकॉज उसपे व्यूज आते हैं. अंडरस्टैंड इट. अपना दिमाग खोलो. आई कैन क्रिएट वीडियोज ऑन गवर्नमेंट इंटर्नशिप, दिस इंटर्नशिप, बट वो मुझे बड़ा लगता है कि अरे कैसा काम कर रहा हूं मैं, because I know that is not going to help you get the offers without depending on placements. What is going to help you get without depending on placements is focused projects in your field, which is, my dear friends, this. Now how do you do it? Next step, you will be even more happy about this. अच्छा ये करना चाहिए. देखो ये 3 चीजें कैसे करोगे तुम, देखो सीधी सी
चीज है फर्स्ट स्टेप. दिस विल साउंड वेरी यूनिक, ये अलग साउंड करेगा. इट इज ओके, घबराना नहीं, समझाऊंगा. देन यू विल बी लाइक वाओ माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट अ ब्लॉग. एक ब्लॉग खोल लो, चाहे वर्डप्रेस पे खोल लो, सबस्टैक पे खोल लो, मीडियम पे खोल लो. प्रेफर रहेगा मुझे कि अगर आप अपना खुद का एक डोमेन नेम खरीद के अपना वर्डप्रेस पे खुद की वेबसाइट सेटअप कर पाए. बहुत ईजी है. इट कुड बी वर्डप्रेस, इट कुड बी विक्स, wherever you want to do it. Then on that blog every week create content, create short or long articles on a lot of these things, concepts. जो भी अभी तक आपने इतने सारे कोर्सेज करे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो आपने राइट फ्रॉम स्टेप नंबर 2 से जो भी आप बेसिक्स सीख रहे थे, वो सब हर बेसिक के ऊपर कंटेंट बना दो ना. जाके क्या करना है, कुछ नहीं. जैसे यू मेक नोट्स, जस्ट द वे यू मेक नोट्स फ्रॉम समथिंग. अच्छा ये बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं सर, वो नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में टाइप करके उसको अपने ब्लॉग पे चिपकाना है. That's it. The very fact that you are creating a good, well-structured article is going to improve your learning from that. Not only learning, it is going to improve your personal brand. I'll tell you why. And this is my story also. That is how I got 3 job offers from outside the campus without depending on placements. Why? Because in my first year of MBA at IIM Udaipur, I started a blog on marketing, which was my field of interest. From that blog, because my articles used to now rank on the page 1 of सर्च इंजन, ब्लॉग स्टार्ट करने के कुछ महीने के बाद ही मेरे आर्टिकल्स, मार्केटिंग आर्टिकल्स गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे आना स्टार्ट हो गए. तो जब भी वर्ल्ड वाइड कोई भी मार्केटिंग का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट सर्च करता था, मेरा ब्लॉग सुपर ह्यूरिस्टिक्स, ये नाम था, ये नाम है आज भी उस ब्लॉग का, वो आ जाता था वहां पे. उससे जब मैं फर्स्ट ईयर और अपने सेकंड ईयर में था, आई यूज्ड टू गेट फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. प्रोजेक्ट्स खुद मेरे पास आते थे एंड दे यूज्ड टू पे इन US डॉलर्स बिकॉज अराउंड द वर्ल्ड. फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, freelancing opportunities which will pay you in INR and USD will come to you if you do this properly. That's that. And obviously from those freelancing assignments and a lot of branding which I used to do, thanks to the content which I used to create, because content and the knowledge and skills is the weapon for you. That is how I got 3 job offers from outside the campus. So this works. Create content on concepts, financial ratios, company, जो भी कंपनी का जो आपने ऊपर यहाँ पे मैंने आपको एडवाइस करा that you have to do company analysis my dear friends, उसको डालो अपने ब्लॉग पे डाल दो. फाइनेंशियल न्यूज कोई आ रही है, कोई नई कुछ है न्यूज, कहीं पे कोई M&A हुआ है, कोई IPO हुआ है, come and create an article on it, done with it, that's it. Become a voice, a student voice who knows this. Even your students will start following you. I mean your fellow students will start following you. Suddenly on your campus you will be known as that finance guy कि हाँ यार ये लड़का तो भाई बहुत उस्ताद है फाइनेंस में, उसका वो है. See, these kind of branding they help, because then even the Placecom will help you get placed in a good finance role. Hello, Placecom का बहुत मेजर रोल होता है, because Placecom कन्विंस करता है आपके एम्प्लॉयर को कि सर ये लड़के में बात है, इस लड़की में बात है, इसको है इंटरेस्ट. They do all of these things. After you have left the room for the interview, Placecom plays a role in that. Therefore, get known to the batch that you finance. These are the ways. This is not, I'm not even kidding. This works like crazy and I can already feel it. You're feeling very excited about this. And my dear friends, share it on LinkedIn, because LinkedIn के बिना तो अब क्या ही है. तुम अब MBA में आ गए हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ गए हो, तो LinkedIn तो बहुत बहुत है इंपॉर्टेंट. आपको अगर कोई इंटर्नशिप लाइफ प्रोजेक्ट नहीं भी मिला, अगर आपने ये सब कर लिया, my dear friends, you will put yourself in a great stead. You will be unique. You will be having so much to talk in your MBA interviews, in your placement interviews, that will be crazy. समर इंटर्नशिप तो आपको इसी से मिल जाएगी. हो सकता है समर इंटर्नशिप भी आप ऑफ कैंपस ले लो. हेलो, आई एम नॉट इवन किडिंग. हो सकता है अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया, शायद समर इंटर्नशिप भी आप ऑफ कैंपस ले रहे होगे. व्हाई? बिकॉज आपने एक ऐसा रोड मैप फॉलो करा जिसने आपको सही समय पे क्या करना है वो एक्सप्लेन करा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई विल मूव टू द फाइनल स्टेप, बट बिफोर दैट वन मोर थिंग आई हैव टू से टू यू. द रीजन व्हाई हियर that in step number 3 I had shared that you should study corporate finance and financial statement analysis and Excel. The reason why I had shared it here was because if you can do it before your MBA, or if you can at least start studying corporate finance and basics of accounting जो यहाँ पे था, then your corporate finance is actually a subject in the term 1 and 2 of your MBA. Financial accounting is a subject in term 1 and 2 of your MBA. MS Excel is a subject also in first year of MBA. You will already be ahead of your class. Your CGPA will improve. And my dear friends, which nobody says to you, finance jobs and consulting jobs में तो CGPA का भी बहुत महत्व हो जाता है. So all of this road map, my dear friends, which I'm sharing with you is not something which is like armchair thought कि चलो ये कर लेना. नहीं, this is what you need to do. My students have followed this. People who follow this swear by this. That is that. Moving on, the last step. अब तुम्हारी समर प्लेसमेंट्स खत्म हो गई हैं. हो सकता है तुम्हारी समर इंटर्नशिप भी हो गई खत्म, and now you want to prepare for final placements. Ideally, do this right after your summer internship interviews are over. First year में ही. Don't wait for अब समर खत्म हो
जाएगी सेकंड ईयर में, नहीं। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब तुम्हारे पास है 10 महीने, 12 महीने, 1 साल है फाइनल प्लेसमेंट्स में तुम्हें फोड़ना है। अगर यहीं से तुमने सही काम कर लिया होगा तुम्हें शायद पीपीओ भी मिल जाएगा, बट अगर नहीं भी करा है कोई बात नहीं, जाना है। अब आता है असली गेम। अब माय डियर फ्रेंड्स करना है तुम्हें जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेशंस। अब नाउ इज द टाइम। अब पहले तक तो ये नहीं था कि सीएफए स्टार्ट कर दिया, नहीं, नाउ इज व्हेन यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट। व्हाई इज इट दैट यू हैव टू डू इट नाउ? सी अगेन, अब अगर आपने जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन सीएफए एफआरएम कर लिया, दिस इज द अल्टीमेट डिफरेंशिएटर। अगर आप लेवल 1 भी हो गए, अल्टीमेट डिफरेंशिएटर है। व्हाई? एक एमबीए कैंपस में कितने ही सीएफएस होते हैं? बहुत ज्यादा नहीं होते, मैक्सिमम 5 to 10%, वो भी ज्यादा बोल गया हूं मैं, मैक्सिमम 5% ऑफ द बैच इज सीएफ। यस, नाउ कॉलेजेस लाइक IIM Kashipur and Udaipur are giving extra marks to CAs so that they can come, so that more finance jobs can come, but abhi nahi hai. So this is the ultimate differentiator. Secondly, this my dear friends is your ticket to off campus job. Off campus की भीड़ में अगर अपना मार्क क्रिएट करना है तो वो एक मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा था, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स which are also helping you not only increase your knowledge but improve your personal brand. आपके आर्टिकल्स लिंक्डइन पे होंगे, लोग देख रहे होंगे, अच्छे अच्छे कंपनीज के लोग देख रहे होंगे कि यार ये कोई एक स्टूडेंट है who's creating this content, very interesting, that's in part. And very frankly, if you were to ask me, I do not make such predictions, but I have to say this to you, in the next 5-6 years ना फाइनेंस एस्पिरेंट के लिए सीएफए ना हाइजीन बन जाएगा। ऐसी हालत हो जाएगी कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में एक्सपेक्टेशंस इनकी इतनी ऊंची हो जाएंगी that all of them will say यार सीएफए L1 तो हो ही हो। That will happen in the 5-6 years. I strongly feel. Therefore, do that already. Now, what you have to do? Again, I have told you 2 things you have to do. CFA कर लो, which is what? Chartered Financial Analyst, या फिर FRM, Financial Risk Manager। अब ये फर्क है। आपको मैंने स्टार्टिंग में, हेलो, अब ये समझना पड़ेगा, ये सब लिंक्ड है। आपको मैंने सबसे फर्स्ट स्टेज में MBA एस्पिरेंट टिल कैट स्टेज में ये कहा था, रिसर्च अबाउट जॉब रोल्स। अगर इसमें यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ रिस्क मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ जॉब रोल, देन CFA नहीं करना चाहिए, देन आप फोकस रहो एंड यू डू FRM, दैट्स इट। मगर इंस्टेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स, देन माय डियर फ्रेंड, CFA इज द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू, बिकॉज CFA में कॉर्पोरेट फाइनेंस, मार्केट्स एंड एथिक्स, स्पेशली एथिक्स, इतना ब्यूटीफुली कवर होता है दैट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रियली अप्रिशिएट यू इफ यू आर अ CFA. So in most cases you will do a CFA. Very specific cases wherein you are very specific about near risk management में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर करोगे आप FRM. How? अब भाई देखो, CFA और FRM में I'll be frank with you, I am not the expert. Neither I am a CFA nor I am a FRM. However, these few things which I'll be sharing now कि how you can do it is what my friends have been able to do and they do well now in this, and also my students of the last 8 years have been able to do. भाई CFA में कुछ नहीं करना है, best चीज to study from which I have seen is the Kaplan-Schweizer notes. उनके notes होते हैं, start to read those notes very well. Then हर notes में there are question bank which is also available online. Solve those questions, get your practice and take mock tests. Everything. I mean, you are a CAT aspirant, you know this, mock tests are everything. Any exam you need to prepare in terms of mock test. At this point, I would advise you, if you are really sure, जब आप इस stage पे आ जाओगे ना, that now you are sure about CFA, तब जाके YouTube के ऊपर go and watch a video by somebody else who is explaining you CFA अच्छे से, because that is not my expertise. I will not fool you कि हाँ ये भी expertise है मेरी और marketing भी expertise और sales भी expertise है, ऐसा भी बहुत लोग ने करा हुआ है. I don't actually intend to do that. But अभी से जाके CFA के ऊपर वीडियोस देखना मत शुरू कर देना, you will waste your time. अभी आप जिस भी स्टेज पे हो इस पूरे रोड में, वहां से ही स्टार्ट कीजिएगा, that is extremely important. And FRM के भी similar 3 steps हैं. इसके लिए GARP की official books are the best books. Similar thing, question solve करेंगे, mock test लेंगे, ये तो standard है ही. This is not wrong. With this, this is the basic. इसके further details के लिए, whenever you cross that bridge, whenever my dear friends you are reaching this place, तब जाके watch videos on this. उसके पहले तक my dear friends, what I have compiled for you is the only thing which you need to ever watch. I can bet you this video will work for the next 5 years. ये वीडियो अगले 5 साल तक फैलेगी. आपका काम है फैलाना, बिकॉज ये रोड मैप नहीं है. अब ये वीडियो के आइटरेशंस बनेंगे. नाउ अदर्स विल कॉपी दिस फ्रेमवर्क एंड विल मेक समथिंग ऑफ देयर ओन. ये भी होगा आप, बिकॉज नाउ सडनली दे रियलाइज दैट यस दिस इज व्हाट यू नीड. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी दैट यस दिस इज द फ्रेमवर्क व्हिच वी नीड. देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, इफ you are somebody who's sure about finance, job roles in finance after MBA, and you want to learn the skills in finance for MBA students, for college students, for finance job after MBA, then my dear friends, this was the video. Do not forget to go down in the comments, like the video and let me know in the comments whether this made any sense or you are like ऐसे थोड़ी होता है यार, ये कैसे रोड मैप है, ऐसे नहीं होता. जो भी बोलना है बोलो, I'll be happy to read those.
वीडियोस। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।